we have earlier what we did was we went through rectifier, single phase AC fed rectifier source, this one, and um, uh, there were two modes of conduction, the discontinuous conduction and the continuous conduction, and the output equations were studied for that. After that, we chalked out the boundaries for speed for continuous and discontinuous conduction on torque speed plane, uh, depending upon these output equations and these output relationships between um, omega and t, and how the omega t characteristics are divided in continuous and discontinuous mode uh, using different values of alpha. So it was very much specified that with these equations that when you work in the range from 0 to 90, you work in the rectification mode in which the power flows from your source towards the load, or say your single phase power, AC power is fed into the DC motor through the rectifier. And when alpha is greater than 90 degrees and less than 180 degrees, in that case, as you all know, that the very same bridge turns to be an inverter, and the direction of power flow now becomes from the DC side towards the AC side. ठीक है, obviously there are certain more requirements for that will be covered in braking. ठीक है, braking में उस चीज़ को लेके चलेंगे जहाँ पे we convert that energy contained in that motor load system into back into electrical energy. ठीक है, बट यहाँ पे एक जस्ट उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप से एक प्लॉट बनाया है हमने खाली ओमेगा टी और ओमेगा के बीच में, तो उससे ये हो कि है कि आपके पास कि व्हेन अल्फा इज बिटवीन 0 to 90, you all know that that bridge works as a rectifier, and when alpha is increased beyond 90 degrees up till 180 degrees, it works as an inverter. तो जब वो इन्वर्टर की तरह काम करेगा तो पावर फ्लो जो है हमारे पास उल्टा होगा, यानी फ्रॉम द मशीन इनटू द सोर्स होगा. ठीक है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर इट और वो सारी चीज़ें होती हैं, बट मैथमेटिकली ये चीज़ अभी इतनी समझ में आ सकती है कि अगर इसे ऐसे वैरी करें तो यू कैन रीच टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपके पास ये जितनी अल्फ़ा 90 तक हैं तो ये सारी ऊपर की कंडीशंस आएंगी ये वाली यहाँ से, और जैसे ही अल्फ़ा इसके नीचे इंक्रीज़ करना शुरू होगा तो उसके आपके पास जो है यू विल बी हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वर्टर बीइंग से exhibited by the converter what you have put. ठीक है, तो उसमें आप देख भी रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन वही रह रही है हमारे पास. ठीक है, ओमेगा माइनस करके हो जाता है. खैर दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन डिटेल व्हेन वी विल टॉक अबाउट ब्रेकिंग. ठीक है, अनदर टाइप ऑफ इनपुट दैट वी कैन हैव एज वी सी ओवर हियर इज दैट कि हमारे पास थ्री फेज सिंगल फेज एसी था, हमारे पास एक थ्री फेज एसी भी है. ठीक है, फॉर लार्ज मशीन्स व्हेन यू हैव लार्ज डीसी मशीन्स, in that case you always prefer to have a three phase input to the rectifier, and that has to be a three phase rectifier, obviously. So because a single phase would produce an unbalancing, और वो सारी चीज़ें known है हमारे पास कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ होती है. ठीक है, तो now इसके बाद हम इसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट स्टिल only the thing would remain is that for one cycle you will be having a full conduction, full controlled conduction, and for the other one you will be having a say uncontrolled conduction for the next cycle. ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम फुल सिंगल फेज का ही इस लेवल पे जो है वो एनालिसिस करते हैं, सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड का ही एनालिसिस करते हैं, और थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड का भी करते हैं. ठीक है, इसकी खाली बताने के लिए ये बात हो जाती है कि जो भी इसकी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है, that output voltage is actually fed into the armature of the DC machine. तो जो भी इस ब्रिज की आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है, that is replaced by V, that is replaced by
this V in this equation, जो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन जैसे हमने यहाँ इन सब में किया था कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसे चेंज कर दिया था, ये सारी वैल्यूज जो हैं वी एम जेड बाई के करके ऐसे करके, या ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस अल्फा करके इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंडक्शन. So this was the thing like this. Okay, so now when we shift from our operation from single phase to three phase. So what actually happens is that there are certain advantages or say necessities to provide it. The very first thing is that whenever you have a large machine, in that case, as the input is going from the AC side, so it must not produce any sort of unbalancing in all the 3D phases. So that is why we prefer to use a three-phase supply. Also, when we go into operation of this converter, three-phase converter operation or three-phase rectifier operation, in that case, what happens is that there is no no discontinuous range in the operation. Okay. Why? Because as we see from this figure is, let me show you. Okay, as you see from here is that when you have this three-phase fully controlled rectifier feeding a DC motor, separately excited DC motor, in that case what happens is that if you see the output voltage, अभी इसके ऑपरेशन की भी थोड़ी सी बात करेंगे, पहले हम आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं, डिफरेंस देखते हैं सिंगल फेज के ऑपरेशन से क्या है. These pulses are of very short durations. And because these pulses are of short durations as compared to the pulses what you have over here, एक साइकिल में अगर आप उसकी पल्सेस देखें तो इसमें आपको दो पल्सेस मिलेंगी पर हाफ साइकिल, टू पल्सेस ऑफ डीसी पर साइकिल ऑफ एसी. ठीक है, पल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अ यूनिडायरेक्शनल वन. ठीक है, तो यू हैव टू पल्सेस ऑफ डीसी per cycle of AC. And when you talk about, when you go into the operation of this, you can see that you have 6 pulses of DC per cycle of AC. Okay. That means that there is each pair of thyristors is fired for a period of 60 degrees and each thyristor is fired for a period of 120 degrees. That means अगर आपके पास T1, T2 conduct कर रहा है, so in that case what happens is that they conduct for a period of 60 degrees and depending upon the firing sequence, one of the thyristors, either positive leg or the negative leg, goes out depending upon the switching criteria, and another negative or the positive leg thyristor replaces it. So each thyristor conducts for a period of 120 degrees in case of a three-phase rectifier, and each pair of thyristor conducts for a period of 60 degrees. So when you see the output of these, you have 6 pulses per cycle of 6 pulses of DC per cycle of AC. So in that case, what actually happens is that the chances of having any discontinuous conduction are almost eliminated, even at very low values of output voltage or high values of alpha. ठीक है, अगर आप उसमें क्या होता था, जैसे जैसे हम इस वाले केस में क्या था कि as we go on increasing the value of we require a lesser output voltage, in that case you have to increase the value of alpha. ठीक है, तो जैसे हम अल्फा बढ़ाते थे तो क्या होता था कि ये देर से शुरू होगा और ये यहाँ भी देर से शुरू होगा, तो the chances of having a discontinuous conduction increased. जहाँ पे भी आपके पास बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा होगा, you will always have a discontinuous conduction.
So in that case, what happens is in the other one, in this one, what we have is that because we have 6 cycle pulses of DC per cycle of AC, so the chances of almost having a discontinuous conduction or a discontinuous current are almost extinct, even for very low output values of output voltage. ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो फर्क आता है फॉर द सेम मशीन का मतलब आर ए भी उतना ही हो, एल ए भी उतना ही हो और ई भी उतना ही हो, even though you don't have any chances of having a discontinuous conduction. ठीक है, now just a brief up of how these operate. ऐसे ही हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गई जब हमारे पास motoring mode में है machine. When alpha is increased beyond 90 degrees, in that case you will be having the waveforms being shifted like this. The waveforms being shifted like this, okay. So you have an inversion mode of the same converter when you have the values of alpha to be greater than 90 degrees. Remember that for practical cases, these marginal values of alpha are generally say avoided. Marginal values means that because it is not practically possible to achieve say 90 degree operation for rectification या up till 90 degree operation, so हम थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं उससे, जैसे 80 डिग्री 70 डिग्रीज हम ऐसे करके यहाँ पर रुक जाते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू फायर ए नेक्स्ट सेट ऑफ थायरिस्टर्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल. ठीक है, तो उसके लिए जो है जो ओवरलैपिंग ना हो, ये सारी चीज़ें आगे की हैं इन द कोर्स ऑफ नॉट ऑफ दिस सब्जेक्ट, दीज आर ऑफ एडवांस लेवल, कि नेक्स्ट सेट ऑफ थायरिस्टर्स जो फायर होते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग आने लगती है बिकॉज दे नॉट द अर्लियर वन हैव नॉट स्विच्ड ऑफ. तो वी टेक अ सर्टेन मार्जिन ऑफ ऑपरेटिंग रेंज. ठीक है, कि 15-20 डिग्री का हम दोनों तरफ से मार्जिन लेके चलते हैं. अगर रेक्टिफिकेशन करा रहे हैं तो अल्फ़ा जो है वो 10-12 डिग्री से शुरू करेंगे और 70-80 डिग्री पर रुक जाते हैं जाके. और अगर इन्वर्जन भी स्टार्ट करेंगे तो एग्जैक्ट 90 से नहीं करते, तो 95-98 से शुरू करते हैं और उधर जाके 165 तक रुक जाते हैं. ठीक है, और इफ द वोल्टेज और द करंट रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट इन दैट केस, देन समथिंग एल्स इज डन फॉर दिस, आइदर देन चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा. ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिन हम प्रैक्टिकल केसेस में हम लेके चलते हैं हमेशा के दैट वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ओवरलैप्स ऑफ फायरिंग सीक्वेंसेस. ठीक है, यहाँ तो आपको थियोरेटिकली तो दिख जाता है कि यहाँ पे जैसे ये ऊपर टाइमिंग डायग्राम बना हुआ है आपका, कि यहाँ पे जो है वो T5 ऑफ हो जाएगा और T1 ऑन हो जाएगा. ठीक है, T6 सर्किट में ही रहेगा, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट सो. ठीक है, you always have the chances of overlapping. That means the current in the other one has not extincted out, and the other set of or the other thyristor in the same sequence is fired. ठीक है, तो that is generally avoided in that case by choosing certain values of alpha not to be close to the marginal values of operation. That means 90 degrees or 180 degrees. ठीक है ना. एक चीज़ और छोटी सी इसमें बता दें जो आपकी काफ़ी काम की रहेगी, दैट हाउ यू चूज द सीक्वेंस ऑफ द फायरिंग. ठीक है, हाउ यू चूज द सीक्वेंस ऑफ द फायरिंग. से यू हैव 3 वोल्टेजेस ए बी एंड सी. ठीक है, तो आप इसे कहेंगे वी एम साइन ओमेगा टी ए को. ठीक है, बी को आप कहेंगे वी एम साइन ओमेगा टी -120 और सी को कहेंगे वी एम साइन ओमेगा टी +120. दिस इज़ अ वेरी वेल नोन कन्वेंशन. ठीक है, अब इसके बाद यू फीड दिस वोल्टेज जो मैंने अभी बताई है आपको टू दिस कन्वर्टर. नाउ हाउ शुड यू डिज़ाइन अ ड्राइव सर्किट टू और पुट इस फायरिंग सर्किट इनटू ऑपरेशन. किस बेसिस पर रखना चाहिए. देखो, यू हैव 3 वेव्स, वी एम साइन ओमेगा टी, Vm sin omega t -120 एंड Vm sin omega t +120. ठीक है, तो इसमें जो है जो आपके पास वेव्स आती हैं से आपके पास ऐसे करके आती हैं. एक पहली वाली ये आई पूरी डॉटेड मिला के, आप अगर इसे भी देखें, खाली पॉजिटिव साइकिल में ही देख रहे हैं, नेगेटिव में भी देखेंगे अभी. ये सेकंड वेव मान लीजिए ये हो गई वी ए, ये हो गई वी बी और ये हो गई वी सी.
ठीक है। अगर इसी का आप रिप्लिका देखेंगे तो मान लीजिए कि ये अगर वो थी आपके पास, तो ज़ीरो से जो स्टार्ट हो रही है वो कोई यहाँ पे वेव होगी, एंड दैट वुड बी दिस वन। जो ये ज़ीरो हो गई है तो यहाँ पे ये वाली स्टार्ट होगी, तो दिस इज से वी बी, वी सी एंड वी ए, ऐसे करके होगा। तो नाउ you have this circuit. If you have to want this circuit to operate, in that case, uh, one thyristor from the positive leg and one thyristor from the negative leg has to fire. The second thing is that अगर आप मान लीजिए इस केस में क्या बनाते हैं, T1 और T2 मान लीजिए होता है, तो सर्किट कैसे बनेगा, ए से चलेगा, T1 होता हुआ मोटर में जाएगा, ठीक है, मोटर से क्रॉस होकर T2 में एंटर करेगा, क्योंकि ये इन दोनों में क्यों नहीं एंटर करेगा, क्योंकि ये दोनों फायर्ड नहीं है, ठीक है, और वापस होके यहाँ से चला जाएगा। रिमेंबर दैट whenever the circuit is into operation, only two phases at a time conduct in a three-phase supply. Two phases at a time conduct in a three-phase supply. ठीक है, the first thing. The second thing is that one thyristor from the positive leg, ये सारे पॉजिटिव लेग कहलाते हैं, ऊपर हैं क्योंकि, एंड वन थायरिस्टर फ्रॉम द नेगेटिव लेग कंडक्ट्स। दो बातें हुई हमारे पास। द थर्ड थिंग इज दैट हाउ इट इज डिसाइडेड दैट विच फेज कंडक्ट्स द मोस्ट पॉजिटिव फेज अमंग ऑल दीज थ्री एट दैट पर्टिकुलर टाइम। द मोस्ट पॉजिटिव फेज, मोस्ट पॉजिटिव कैसा है कि जैसे एक वेव फॉर्म ये चल रही है आपके पास, एक ये वाली चल रही है, एक ये वाली चल रही है। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे जहाँ पे मेरा ये कर्सर है आपके पास, तो यहाँ पे ये वाली वेव फॉर्म इस जगह पे है, ये वाली भी इस जगह पे है, ठीक है, तो हाई मोस्ट पॉजिटिव ये वाली बनी। तो ये जो फेज है बीच वाला, दिस विल द थायरिस्टर ऑफ दिस फेज से इफ इट इज बी विल कंडक्ट, यानी T3 कंडक्ट करेगा इस पॉइंट पे। कब तक करेगा, जब तक ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा इन दोनों में, तीनों में से एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा और एक सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर आप नेगेटिव साइकिल्स देखेंगे तो अगर आप इस पॉइंट पे देख, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए आप, इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इसी पॉइंट पे अगर देखें, तो यहाँ पे जो है ये वाली वेव फॉर्म जो है ये सबसे नीची है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये वाली वेव फॉर्म जो जा रही है ये यहाँ पे कहीं पे है और ये वाली यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो द मोस्ट नेगेटिव इज दिस वन। सो वॉट एवर फेज to which this waveform belongs will make its negative leg thyristor work for a period for which it is the most negative one. तो हमारे पास एक पॉजिटिव लेग में से कनेक्ट करेगा और एक नेगेटिव लेग में से कनेक्ट करेगा, उतने पीरियड को कनेक्ट करेगा जितने पीरियड के लिए it has got the most positive value and the other phase which has got the most negative value conducts for that much of period. यानी अगर आप फेज ए, फेज बी और फेज सी लें, तो ये जो T1 और T4 हैं फेज ए के थायरिस्टर हैं, T3 और T6 जो हैं वो फेज बी के हैं, और T5 और T2 जो हैं वो फेज सी के हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव द मोस्ट पॉजिटिव टू बी से फेज बी, in that case T3 will be conducting, और से phase B will be conducting for the positive leg। और अगर इस वक्त यहाँ पे C most negative है तो आपके पास ये करंट जो वापस जाएगी, एंड T2 is to be fired in that case, and therefore it the circuit is completed like this, ठीक है। तो the phase B and phase C conduct for that much of particular period of time for which they are most positive and most negative, ठीक है, and that happens to be there for a coincidence period of 60 degrees। that means ये दोनों एक पेयर मिला के 60 डिग्री चलता है, उसके बाद दोनों में से कोई सा एक जो है वो कम नेगेटिव या कम पॉजिटिव हो जाता है, and it is replaced by another one, but the other one remains into the circuit for a period of again next 60 degrees. So each thyristor conducts for a period of 120 degrees, and each pair of thyristor conducts for a period of 60 degrees in case of a three-phase converter. Okay. The second thing is that these are the conditions in which we are talking about idealities. Idealities यानी हमने ideal switch consider किया है, जिसका स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइम जो है वो ज़ीरो है, स्विचिंग लॉसेस ज़ीरो हैं, ठीक है, जो उसकी व्हेन इट ब्लॉक्स
When it is open, it completely blocks the current, उसमें कोई लीकेज करंट नहीं होती. When it is on, it is say short circuited, no voltage drop appears across it. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लेके करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं. In case of practical conditions, we have something more say complexities added to it. तो वो अभी scope of subject से बाहर है. But still, you can very well state over here is that कि each pair of thyristor conducts for a period of 60 degrees, ठीक है, in case of ideal conditions, and each thyristor conducts for a period of 120 degrees. One thyristor from the most positive phase and one thyristor from the most negative phase conducts in the positive and negative leg of the converter respectively, and two phases of a three-phase supply conduct for a at a particular time. ठीक है, दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियलिटीज. जब नॉन आइडियल कंडीशंस हो जाती हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं. बट दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, सो वी अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन दिस वन. You cannot have any discontinuous conduction because you have 6 pulses of DC per cycle of AC. ठीक है, तो the chances of having any zero current are almost eliminated. The second thing is that when this converter works in the range from 0 to 90 degrees, it works as a rectifier. When this converter works in the range from 90 to 180, theoretically, in that case it works as an inverter. When it works as an inverter, the energy is fed back from the motor toward into the source, and there are different methods of say taking care of it. वो भी हम देखेंगे अभी आगे इसी सब्जेक्ट में कैसे लिया जाता है. So you can go for both the operations. The first one is the motoring operation, in which the energy flows from source towards the load. And in the second case, that you have the energy flowing from load to the source. So the first one is known as motoring, the other one is known as braking. So both these modes of operation can be realized using the same converter with different firing sequences and configurations. ठीक है, यानी अगर आप 0 से 90 तक चलाएंगे तो मोटरिंग चलेगी, और 90 से 180 तक चलाएंगे तो इन्वर्टर की तरह काम करेगा, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपके पास चलेगी. ओके, रेस्ट जो इसकी आउटपुट इक्वेशन होती है, जैसे एग्जैक्टली द वेरी सेम थिंग दैट वी हैव द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट. ये जो हमारे पास ऊपर ये वाला सर्किट है, ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो है, जो आउटपुट वोल्टेज है थ्राइस वीएम बाई पाई कॉस अल्फा, ये आती है निकल के. ठीक है, एंड दिस इज सिंपली सब्सटीट्यूटेड इन द आर्मेचर voltage input of the speed torque character, general speed torque characteristics of a DC machine. ठीक है, जब आप इसे फीड कर देते हो तो यू हैव द characteristics now being plotted, ओमेगा टी कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी प्लॉटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा. तो जैसे जैसे अल्फा हमारे पास इंक्रीज होता चला जाता है, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज आपके पास डिक्रीज हो रही है. तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पहले बनाई थी, तो वो चीज़ नीचे की तरफ ऐसे दिखती है कि इफ़ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा इजिकल टू 0 है, और जैसे जैसे हम अल्फा बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कम होती जाती है. आउटपुट वोल्टेज कम होगी तो दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज मोटर की कम हो रही है. So the characteristics are shifted downwards. The very same thing what we studied in when we were studying speed control of DC motors. Exactly उसी तरह की characteristics जो हैं वो नीचे with decreasing alpha आपको मिलती चली जाती हैं, जो आपने decreasing armature voltage के लिए बनाई थी. ठीक है, and the characteristics is being depicted like this of this one. ठीक है. First we'll talk about in the next class most probably tomorrow inshallah we'll be talking about ये अभी नहीं लेंगे हम. We'll be talking about the braking of DC motors, how they are braked, and what are the different methods of braking of DC motors, and what are the circuit configurations and the conditions required during braking. So anybody of you wants to ask anything about the topics that are covered today?
किसी को कुछ पूछना है? Okay, fine. Then we'll be No, meeting tomorrow. Then okay, thank you. We'll be meeting tomorrow. Okay, thank you.